تو اسی ٹاپک کو جو ہے وہ اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں یا اس میں مزید رہا تو کچھ بھی نہیں، ماشاء اللہ آپ نے سب کچھ ڈسکس کر دیا. تو میں بھی تھوڑا بہت لکھ کے لایا ہوں، تو کافی لمبا ہے مگر میں مختصر سے بات کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے پاس قرآن مجید 1500 سال ہو گئے، ابھی تک ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ خدا کیا چیز ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ بہت حیران کی بات ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ہر انفارمیشن دیا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے، ہم کو تصور میں نہیں لا سکتے ہو. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کو کیسے پہچانو گے اور کیا انہیں اپنی صفت یا ایٹریبیوٹس دیا ہوا ہے قرآن مجید میں. تو یہ اتنی سی بات ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک ہم لوگ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ از گاڈ امیننٹ اور از ہی ٹرانسینڈنٹ اور از ہی بوتھ. How can God's presence be felt? Did God create human beings in His image? جیسے آپ نے کہا، یہ بنی اسرائیل لوگوں نے کہا تھا. What is meant by image of God? Does God have an image or it is just our imagination? Does He sit on the throne above the heavens? یہ Abu Dawud and Tirmizi in hadith number 5480 give physical details of the throne of Allah. According to them, Allah's throne rests on the back of mountain goats that are standing in an ocean above the seventh heaven. Are God the universe one and the same? Is God matter? Is matter God? Is God human? The concept of God and the universe being the same is called pantheism in Western philosophy. And Wahidatul Wujud is Sufism, Muslim mysticism, and Vedanta in Hindu mysticism. Can human beings comprehend God? Is the human mind even equipped to comprehend God? Sufi mysticism claims that they can comprehend God. They claim that they can even establish dialogue with God. اب یہ سب جو ہے سوال ابھی تک ہم لوگوں کے دل میں یہ نکلتا ہے، آئیڈیاز اباؤٹ گاڈ کے بارے میں اور سبجیکٹو کانسیپٹ آف گاڈ، ہم لوگ کیسے اللہ کو سوچتے ہیں. اب دیکھیے ہم لوگ کس قسم کے خدا کو تصور کو بدلتے رہتے. جیسے آپ نے کہا a Muslim family is struggling to survive in the absence of a welfare system, as is the case in most of the Muslim countries. Many nights the children sleep hungry. The father cannot find a job. In desperation he begs of God for food. What is his concept of God? وہ کس قسم کے خدا کو سوچتا رہتا ہے کہ میرے پاس کیوں یہ رزق نہیں ہے، میرے بچے کیوں بھوکا سو ہے. نیچرلی اس کا آئیڈیا تو خدا کے بارے میں الگ قسم کا ہوگا. A Muslim child born in a rich family leads a life of luxury and comfort without much effort. He thanks God for everything he has. His dogs and cats get gourmet food, while human child in his neighborhood die of malnutrition and hunger. He is satisfied in his belief that everything comes from God. What is his concept of God? وہ کس قسم کا خدا کو سوچتا ہے. A Muslim woman in a Muslim country is happily married and has a comfortable life. Her husband dies unexpectedly in an accident. Thereafter, she faces untold misery and hardships. She prays to God for mitigating her miseries and hardships. What is her concept of God? Muslims in many Muslim countries can divorce their wives by force of so-called Sharia laws. This means the husband can simply utter the word talaq 3 times to make the divorce final and complete. Although the husband prays regularly and gives zakat and performs hajj, what concept of God do these Muslim husbands have in their mind? In clear violation of the Quran and Sunnah, many Muslim girls are killed in the name of family honor.
by their fathers and brothers. Instead of being ashamed, they feel honored by these killings. These fathers and brothers are very particular about their daily prayers. Which God are they praying to? Certainly not the God of Quran. Many Muslims feel superior on basis of being born in a particular family or clan or tribe, like Khans, Pathans, Sayyid, like in the Indian subcontinent. What concept of God do these Muslims have? Which Sunnah do they profess? Certainly not the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for he demolished these distinctions of superiority based on birth. In Muslim countries, Muslims with disabilities are treated poorly and with disrespect. They face humiliation and deprivation on daily basis. As a result, most of them turn to begging. What is their concept of God? What about those Muslims who treat them badly but pray to God regularly? What is their concept of God? And in many Muslim countries, the landowners treat their workers worse than animals. Obviously, a landowner and his workers have different concepts of God, even if they pray together in a mosque. What about a king's concept of God? Will his subjects have a different concept of God? Or the same applies to religion, political and economic leaders with their followers? While going around the house of Allah during Hajj, most pilgrims strive to kiss the black stone, called the Hazr Asad. Many pilgrims, in their zeal to kiss the stone, trample over the other pilgrims. What concept of God these people have while going around this? From the above examples, it is obvious that Muslims in different situations view God differently. In addition, because of this subjective and personal concept of God, both Muslims and non-Muslims view God as someone to be feared and someone who can be influenced to change his decisions in their individual, familial, national favor through prayers, rituals and sacrifices. तो ये तो हो गया अल्लाह को किस किस्म का कॉन्सेप्ट हमारा दिल में है. अब ये कि मैं तो समझता हूँ कि इसके बावजूद कुरान मजिद में जो हिदायत हम लोग को दिया है उस लिहाज से हम लोग वी कैन फॉर्म ए वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड. अब डॉक्टर साहब ने कहा कि वाई वी फील दिस नेसेसिटी, क्यों हम महसूस करते हैं कि अल्लाह को जानना ज़रूरी है. मैं तो कहता हूँ कि इंसान जब सोचता है कि व्हाट इज़ माई एग्जिस्टेंस, वेयर डू आई कम फ्रॉम, व्हाट इज़ माई गोल, वेयर आई एम गोइंग, जब इस किस्म के सवाल का जवाब वो ढूंढता है देन ही हैज़ टू थिंक ऑफ दिस, और अल्टीमेटली कम्स इन देयर माइंड कि मुझे किसने बनाया है और इस दुनिया में व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ दिस लाइफ इन दिस वर्ल्ड, क्यों आया हम, वेयर आई एम गोइंग टू. तो इस सब सवालों की जवाब मेरे ख्याल है आई थिंक यू कैन फाइंड वेरी इजीली इन द होली कुरान. उसके बाद अल्लाह ताला ने हर एक चीज के अंदर अपने वही जो है ही हैज एम्बेडेड इन एवरीथिंग. जैसे आप डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मुर्गी के बच्चा जब अंडा से निकलता है तो वो दौड़ के पानी की तरफ नहीं जाता, बतख के बच्चा जो है पानी की तरफ जाता है. व्हाट इज दिस? दिस इज द वही. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हर एक चीज में अल्लाह ताला ने वही दिया. एक मक्खी में जो शहद कलेक्ट करते उसके अंदर भी वही है. तो क्यों दिया है वही? वही का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय अल्लाह ताला. ये सूरह रहमान में अल्लाह ताला कहता है अश-शम्स वल कमरु बिहुस्बान नज्म व शजरु यसजुदान. वही का मतलब है कि यू लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन आई हैव गिवन, और दिस इज एम्बेडेड. ये पैदाइशी सब चीज के अंदर दिया हुआ सिर्फ इंसान को अल्लाह ताला ने वो ऑप्शन दिया हुआ है कि यू कैन चूज योर ओन एक्शन. मगर इसका मतलब वही का मतलब है कि लीड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन आई हैव गिवन एंड दैट डायरेक्शन लाइज इन द होली कुरान. तो इफ यू फॉलो दैट बड़ी आसानी से हम लोग वी कैन नो हु इज गॉड, व्हाट टू डू विद हिम, और उसको कैसे हम लोग इबादत करते हैं.
इसके बगैर मैं तो कहता हूँ कि पूरा दुनिया के लोग, हम जो मुसलमान लोग, हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आई डोंट नो हम लोग को दिल में क्या, किस कॉन्सेप्ट लेके हम लोग इसकी इबादत करते हैं और कहाँ तक ये सही है. सो इट इज़ बेटर दैट वी टर्न टू द कुरान. जिस किस्म के इंफॉर्मेशन आपने दिया है, आई थिंक दिस शुड बी इनफ टू गेट ए वेरी गुड क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड. और हमारे दिल को, हर एक इंसान को, मैं I tell you very frankly, I have been going around many countries और बहुत जगह में मैंने इस किस्म का कोशिश किया लोगों को बताने के लिए कुरान के बारे में. मैंने देखा है कि our knowledge about God और knowledge about Quran is nothing. कुछ नहीं है हम लोग के अंदर, बस सुनी सुनाई बात लेके हम लोग अपने आप को बहुत मुमीन समझते हैं, इबादत करते हैं. I don't know how far I am correct. आप लोगों को भी ख्याल किया होगा. इवन माई वन आई थिंक कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जो इबादत किया, नमाज पढ़ा, क्या किया मैंने विदाउट नोइंग एनीथिंग, जस्ट खड़े हो गए, पढ़ लिए. तो अभी भी टाइम है. लेट्स टर्न बैक टू द कुरान एंड गेट द इंफॉर्मेशन. और हमारी इबादत जो है, इज़ नॉट ओनली जस्ट से प्रेयर्स, इज़ नॉट जस्ट फास्ट इन ए मंथ ऑफ रमजान और यू गो फॉर द हज. एवरीथिंग वी डू should do according to the wahi Allah has given us, and that lies in the Quran. Thank you very much. Thank you जी. बड़ी अच्छी thoughtful